हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो? अरे यार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन. यस, इट्स बीन अ व्हाइल. और आई थिंक लैग कर रहा है क्या थोड़ा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। Okay, so I think it's basically my at my end. लेकिन हाँ, people out there, very 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 good to be back, of course, and of course with a great panel, a great chat. मैं देखा people are waiting. Thank you. Quickly pick up करते थे. Yes, lot of drama जो हुआ था first leg में, UCL semi-final second leg. That is the time that we wait for, and that is what we'll be discussing, and we'll be having of course Vedant now, but Suryansh and Uday are already there. So firstly, big up Uday. Welcome back. Loudmouth football. कैसा लग रहा है? 1 foot in the Champions League final. Paris, maybe what? I think 10th time होगा क्या आपका finals में, if I'm not wrong. I think it's So 11th or 10th time, yeah, yeah, somewhere so I there. think along with maybe AC Milan, Bayern Munich, and Real Madrid, up Yeah, will be the only fourth team to actually be there in double digits. So I know too early to call, but how's the first feel? I think being the most successful English team in the European competition, I think काफी अच्छी feeling आ रही है, to be honest. But Villarreal को अभी भी we don't need to be complacent. Villarreal में भी जेरार्ड मोरेनो जी आ गए हैं वापस, तो वो दांजुमा के साथ खेलेंगे. अगर दांजुमा की फुट इंजरी ठीक हो जाए तो आई थिंक दे विल आल्सो बी स्टार्टिंग लिवरपूल डिफेंस अ लॉट. तो आज का मैच बिल्कुल अलग होगा, मसाला अलग होगा आज के मैच में. मसाला लगा वही हम बात करने वाले डिटेल में. बट टॉकिंग अबाउट डिटेल, लाइक Madrid pundits are here. Of course, Vedant is going to come. Suryansh भाई, comeback king. Firstly, congratulations. La Liga title, 35th La Liga title, वो तो बनता ही है. बट क्या लग रहा है यार, comeback kings का मतलब कुछ तो लिमिट होगी, और यू आर एक्चुअली रियली एक्सपेक्टिंग इट लाइक आज भैया एज आई कल? सेड अर्लियर ना, मतलब बर्नेबाउ में वेन एवर वी फाइट ना, मतलब टू प्ले इन द चैंपियंस लीग फाइनल्स, वी हैव नेवर लॉस्ट इन द लास्ट 11 years. अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, वेन एवर वी प्लेड सेमीज एट सेंटियागो बर्नेबाउ, तो वी हैव ऑलवेज वन दैट मैच. तो एक्सपेक्टेशंस तो है कि वी माइट आउटशाइन सिटी इस मैच में. Yeah, absolutely. यहाँ पर quickly मैं big up करना चाहूँगा. Of course, talk of you in the house. Thanks for joining, bro. Of course, we fight. Try till we succeed. All of us. Rahul Trivedi, of course, is here. Arnab बोल रहे, I see what you did there in the poll. Good evening. Yes, of course. जैसे मैं बोला good evening. Arnab is probably, I think, I'm assuming, going for Villarreal, and that's what I kind of missed. Villarreal, like, honestly, you had a chance. Yeah, Super Cup. इतना तो मैं बोलना बनता है यार. We got the Super Cup. Chelsea, that is right. As in, you had a chance of a trophy. But interesting poll. सब लोग लीजिए poll. वेलकम बैक किंग. यस ऑफ कोर्स यार, मैं सोचा यार कम बैक किंग से तो मुझे भी कम बैक करना चाहिए. दैट इज द टाइमिंग राइट, आई मीन वी हैव इन द हाउस. यस, थैंक यू, ऑल गुड. हेलो साई, भूमिल, एंड ऑफ कोर्स यार विनिंग द ट्रेबल, बात करेंगे उसके बारे में. ऋषिकेश इन द हाउस एज वेल. वेल, आई नो काफी सारे स्टैट्स है वी कैन टॉक अबाउट. आई नो चैंपियंस लीग, लेकिन वही है चैंपियंस लीग नॉकआउट गेम्स. और बाय द वे पीपल, मैंने एक वीडियो रिलीज की थी एंड आई स्पोक अबाउट द सेकंड लेग कमबैक्स, राइट, जो होता है. दैट इज व्हाट प्रॉब्ली that video was probably for Villarreal, and इसलिए मैंने मिस कर दिया उनको पोल में. That comeback, they just need to look at that video. It's quite possible. हुआ है, काफी बार हुआ है. 2 goals is absolutely nothing, to be honest. लेकिन first quickly मैं बोलना चाहूंगा was Real Madrid Man City. That is standing what, 3-4. Man City last 4 matches में, Suryansh, they have scored 16 goals at an average of 4 per game, right? और City has been knocked out only once in the last 10 UCL ties जब वो जीती है फर्स्ट लेग. ठीक है, तो दैट विल बी समथिंग. और वो था, इफ यू रिमेंबर, मोनाको के साथ, एंड दैट मोनाको साइड वाज समथिंग एल्स, राइट? नॉट द रियल मैड्रिड आरंट. लेकिन हाँ, कमबैक किंग्स मैड्रिड है. They have never made it to the final when losing the first leg of a semi-final. Lost 300 trot versus City. So stats की बात कर जाए तो it's kind of going towards Man City. But I think talking about Real Madrid and that celebration जो हुआ था, because we have to kind of highlight that different level of celebration. Been a while कि La Liga जीती है Real Madrid, 35th league title. Crazy celebration. लेकिन do you think Suryansh, would that be a distraction before this big game, or आप बोलोगे it will be a shot in the arm? What do you think? I'll say that it's going to be a booster. मतलब basically it's going to be a morale booster. मतलब whenever we have won something like this ना, तो अपने का जो वो है ना आउटकम, वो हमेशा Mm-hmm. फेवरेबल रहा है. मतलब मैड्रिड when we are coming after winning something, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपन कुछ जीतेंगे उस केस में. तो आई गेस या आई सी दैट, आई अंडरस्टैंड कि हाँ सिटी को क्यों बैकिंग मिल रही है.
everyone understands it, क्योंकि they are one of the best clubs in the world, if not the best, क्योंकि अब Liverpool भी है on the same. Earlier I was like a pro Man City कि हाँ they are the best, but at the moment I guess Liverpool outshines them by a bit. तो उदय भैया congratulations उस केस में. तो coming to the point itself, I'll say कि काउंटर पे सिटी पिटती है, बहुत बारी पिटती है. वी हैव सीन इट अगेंस्ट अ गेम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, वो 0-0 जो ड्रॉ था. इट इज नॉट अभी का गेम, इट्स अर्लियर का गेम. उसमें क्वाइट एविडेंट था कि सिटी ना जब काउंटर पे खेल रही होती है ना, मतलब व्हेनेवर दे आर फेसिंग काउंटर दे आर क्वाइट वनरेबल. एंड लेट्स बी रियल, रियल मैड्रिड का इट्स टाइम मतलब दिस सीजन वी हैव बीन क्वाइट मतलब आई विल से डायरेक्ट एंड quite lethal on counters, so I'll say that will work in our favor. Interesting. Or by the way, as I say always, let's like the stream or please check the description. There is Loudmouth Football, उनका channel है, काफी अच्छा channel है. Please go and follow. And same goes for Madrid Pundits. आप देख ही रहे हो, काफी अच्छा content दे रहे हैं. So welcome Vedant, welcome to Almighty Blues. कैसा लग रहा है यार? Feel मतलब I have taken Suryansh's kind of feel and Uday's feel. What is your feeling like? Like Suryansh said, Man City are there. They are beatable. ऐसा नहीं कि they are not beatable. They are beatable, but they have one ugly as well. And we know against Atletico Madrid, Madrid side, ugly win आती है. So in terms of tactics, where are you, Vedant, and how are you feeling overall? First of all, thanks a lot for calling me here. Secondly, actually मैंने उदय भाई से भी थोड़े टाइम पहले बात करी about this, and the thing is कि मेरे को personally बहुत mixed feelings हो रखी है इस game के बारे में. Especially after the first game, जो first leg था, जहाँ पे City were creating chances after chances, and we just did not have any response. I mean, of course, we did score goals, but not half as many chances as what Manchester City produced. So mixed feelings हो रखी है. The Bernabeu factor does come into the picture once again. PSG and Chelsea. I mean, if even you have witnessed it of lately. So the Bernabeu factor does come into the place, and let's see. I'm really hoping for a Real Madrid win here, but City do have a higher win probability than Madrid. Yeah, absolutely. वो तो है, मतलब again, Real Madrid will take that. Not being favorites is something which kind of works in favor of them, like I would say. और मैं सूर्यान से पूछा था about celebration, right? Leave the distraction part. लेकिन ये बोला डेविड अलाबा ने कितनी कुर्सियां तोड़ी है celebration में, कुछ है न्यूज़ उसका? The guy David Alaba is like only kind of just chairs, but absolutely brilliant. Like Ancelotti, different element. But यहाँ पर आरिफ से पूछते हुए, what do you think of the rumors of Cristiano back to Madrid? Will it be fair for Vinny to sit on bench having such a tremendous season if Ronaldo comes back? Yeah, actually neutral से पूछते यार, मतलब first of all, Uday, the way Cristiano has done the Premier League, he's kind of proven again. He is there in terms of numbers, right? So, do you think, as in one of the big sides in world football right now, should actually go for him? Maybe looking at Manchester United, it has not worked in favor. I know he wasn't the problem. He was probably the savior in many cases. Lekin फिर भी मतलब should a team like Madrid or any other big team in your mind should take a punt? Yeah, I think it is time for him to return to his boyhood club, यार, to be honest. I think इस एज पे आके अगर आप मैड्रिड में आ भी जाओगे, आप बेंजेमा या विनिशियस, he'll start overshadowing them. No doubt he'll be scoring goals, and at this age to score so many goals is again बहुत ही बड़ी बात है. But बेंजेमा फिर पड़ जाएगा इस मामले में कि भाई his stardom will be taken away. So I think first of all it is just a rumor right now. There is nothing concrete on the grounds. तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानता कि रोनाल्डो वापस जाएगा मैड्रिड. बाकी स्पोर्टिंग जाना चाहिए उसको, उसका बॉयहुड क्लब है. Interesting. वही है, मतलब there is a debate कि यार whether he can play the highest level again, मतलब when it comes to week in week out. संकल्प यार, मतलब that is a brave prediction, but again I remember हम El Clasico की prediction किए थे, not kind of throwing it in the Madrid pundits here, but the fact that there were people who said 4-0, मैं हंस रहा था. So I won't say never, but I think we have seen it यार as Chelsea fans, like जो Real Madrid की थी, they can come back in like minutes or even the first leg, right? Perez will not allow it, to be honest, is what they are saying. Let's see. And Rahul says 77 votes, but only 57 like Toko. Let's keep supporting Ankit Bhai. Yes, of course, that always helps. Now, let's talk about the other game as well, Uday. Coming to Villareal versus Liverpool. I know 2-0 hai. Again, like I said, 1 foot in the final. Maybe Paris ke tickets already booked होंगे, from what I know. But like I said, comebacks are always on. लेकिन क्या आप सरप्राइज थे फर्स्ट लेग में the way Villarreal sat back इतना, मतलब I know, मतलब obvious tactic है, Emery would not say that we are a better team,
But if you remember against Juventus, was it when they actually went on the attack and scored goals as well? So they have probably missed their buzz, don't you think so? And now that they're having a lot of injuries, do you think it has played in Liverpool's hands? Totally, I think Liverpool played a masterclass. To be honest, if you are going against a team जो gegen pressing करती है, बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी intensity match करना. Plus, Gerard Moreno used to help them out in forming that front line of press. Danjuma bhi was totally, he dispersed into thin air. So I think यार अभी comeback करना बहुत possible है for sure. Looking at how they took out Juventus and Bayern Munich, but मेरे हिसाब से लिवरपूल अगर थोड़ा स्टेबल गेम खेले भी ना, इफ दे डोंट इवन अटैक देम ऑन द फ्रंट फुट, तब भी लिवरपूल निकाल लेगी ये गेम. अगर हार भी रही होगी ना 1-1-0 2-1, तब भी निकाल लेगी. नो डाउट उनाई एमरी नोज हाउ टू win in big cup fixtures, but looking at how Villarreal ventured out in the first leg, second leg में अगर वो अटैक करेंगे तो लिवरपूल will take advantage of the spaces behind them. So it is very obvious कि attacking momentum is towards Liverpool then. So I think निकाल लेगी लिवरपूल ये गेम मेरे हिसाब से. निकाल लेगी क्या? Yeah, but talking about निकाल लेगी, Suryansh, like again, a lot of people are asking about I think availability in terms of what Madrid are having, what City are having. So from what I know, Cancelo is definitely back for City. So I don't know, will Madrid feel that the fact that Kyle Walker injured थे, I don't think as per Pep वो available नहीं रहेंगे till the end of the season. That's for the next 3 weeks, right? So possibly Kyle Walker will not be there and Cancelo will be at right back, ठीक है? और left back में because of that, as in again Zinchenko रहेगा. And last game में I think clearly it was for everyone to see. इतने सारे goals थे, awesome as a neutral fan, but इतने सारे mistakes थे at full backs, for both the teams. Considering that, what do you think? Should Real Madrid, being 1 goal down, should go on the attack and play a Rodrigo, or would you go with Valverde, keep it basically यार एक गोल का डिफरेंस रखो, और हमेशा टैक्टिक रहा है रिसेंट वीक्स में एंचेलोटी का कि let that other team take advantage, let them even score 1 goal और हम वापस आएंगे. भैया इट्स लाइक इस मैच में वी कैन नॉट गो 1 डाउन. ठीक है, डिफरेंस ये आ जाता है क्योंकि मैन सिटी इज द ओनली टीम ना जिसके अगेंस्ट आपको ज्यादा डेफिसिट नहीं चाहिए, बिकॉज दे विल थ्रैश यू उसके बाद. मतलब वंस दे गेट गोइंग ना दे विल थ्रैश यू. मतलब इट्स क्वाइट एविडेंट कि अगर आप सिटी को एक बारी मतलब जैसे ही इक्वलाइजर पड़ता है दैट इज वो 1-1 हो जाता है. मतलब मैड्रिड अगर पहले उसमें स्कोर कर देती है, एंड दैट केस आई विल से कि हाँ रॉड्रिगो शुड प्ले दिस गेम, क्योंकि considering the amount of goals and assists he has been providing in the last 4-5 games, he definitely has to be a starter. And considering कि उस side Zinchenko है, there is a high possibility कि Rodrigo might score from that side, क्योंकि Cancelo versus Vinny will be good, and Vinny has to work his ass off अगर उसको Cancelo जैसे player के against खेलना है, because even though he's not as spacey as Kyle Walker, उसका defensive awareness बहुत ज़्यादा है Cancelo का. हाँ, तो that will play in the favor of चेंज ऑफ City. टैक्टिक हो गया ना उनके लिए थोड़ा. तो लेफ्ट बैक से अब लेफ्ट बैक पे अटैक होगा, मतलब लेफ्ट फ्लैंक से मारना पड़ेगा गोल rather than क्योंकि going with वो भी अपना नेथन आकी भी इंजर्ड है शायद, वो भी ही केम ऑफ इंजर्ड ऑन द वीकेंड. और बाय द वे गणेश क्या मतलब देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ दिस सीजन, लेकिन आई थिंक पेप हैज टोल्ड ही इज नॉट गुड टू स्टार्ट लीस्ट फॉर द टाइम. अगेन आई विल बी रियली सरप्राइज्ड. आई नो बहुत बड़ा गेम है, बट रिमेंबर City are fighting for other things as well. Real Madrid are not fighting as much, तो वो एक advantage है certainly for Real Madrid. Great point by Suryansh there, absolutely right. Like just sticking to this game, I know बहुत सारे questions आ रहे हैं for Villarreal Liverpool. I'll get back to them people. लेकिन again sticking to this game, Vedant भाई, मतलब the fact that I think if I'm not wrong, both teams got 4-0 victories at the weekend, right? As in ज्यादा चेंजेस किए थे मैड्रिड ने कंपेयर टू सिटी, यू कैन से दैट क्लियरली. लेकिन आई थिंक वही है, लाइक आई सेड दैट एक है मैन सिटी आर प्लेइंग न्यूकासल एट द वीकेंड. लेकिन मैड्रिड डिड दे एक्चुअली रेस्ट पीपल बिकॉज ऑफ इंजरीज? आई नो डेविड अलाबा वाजंट फिट, ही केम ऑफ आई थिंक हाफ टाइम पे ना फर्स्ट लेग में. तो व्हाट इज द इंजरी न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड? Basically, David Alaba will be out. David Alaba has an adductor injury issue. That's a big thing for Real Madrid and big thing for David Alaba as well. He is supposed to miss out a lot of games. I think he won't be available for Atletico Madrid as well. He was playing centre back in the last game, and here he will be getting his spot back. That is the CDM role. And obviously, we missed Casemiro on the first leg, and now he's back. Interesting. Yes, Casemiro and Camavinga were centre backs. हाँ, वो एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था, एक पॉइंट पे था वो वैसा.
Interesting. Casemiro But was Chandan is like, centre back पहले, yeah. मतलब हाफ टाइम तक ही वाज देयर एस्पेन्योल के. कामाविंगा अच्छा, डीप डाउन आ रहा था, इसलिए लग रहा था कि ही इज प्लेइंग लाइक अ सेंटर बैक, बट वो नहीं था. कैसेमीरो वो वाज प्लेइंग अ वैसे नहीं. सेंटर बैक गेम में. हाँ. ओके. अरे चंदन बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ पेप माइंड गेम. तो या तो आप माइंड गेम्स बोलो या तो बोलो ओवर थिंक. There are two ways that Pep kind of deal with it. So I think Uday, मतलब if you were a Man City coach right now, the fact that Man City are dominant, लेकिन we have seen in the past now they've got a lead और वो जा रहे हैं to Madrid with a lead or pata yaar they have won the league, they'll be very confident as well at home. I think Real Madrid haven't failed to score from December 2018 or something. मतलब it is something else at home, right? That they are different level. और Man City काफी goal score करती. तो Pep for once should take the back foot and play the waiting game, don't you think so? And because Madrid hasn't seen that, Madrid has allowed the other team to actually go on the attack, and that kind of gives them the space, नहीं? अब जैसे एथलेटिको का सेकंड लेग देखो, उसमें सिटी ने क्या किया, वो डिफेंड ही किया उन्होंने पूरे ऑलमोस्ट 90 मिनट्स. तो वो टैक्टिक कैन वर्क, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क व्हेन यू हैव विनिशियस. अगर विनिशियस वगैरह को आप बॉल डोमिनेट करने के लिए दे दो, ये तो भागेंगे, दौड़ाएंगे सिटी की डिफेंस को. तो आई थिंक कंसेलो will do the job, man. Even though I think defensively Kyle Walker is better, वो तो खेलेगा नहीं बिल्कुल भी. But मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि इनके राइट फ्लैंक पे लास्ट टाइम they were totally subdued. रॉड्रिगो से कोई आउटपुट आई नहीं रही थी, तो जिनचेंको ने बहुत अच्छी एक परफॉर्मेंस दी थी. प्लस मैड्रिड वर नॉट एबल टू ओवरलोड ऑन ईदर साइड. तो एक तो स्ट्रेच आउट करने, सिटी को स्ट्रेच आउट कोई कर नहीं पाता है, लिवरपूल भी नहीं कर पाती है. तो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट विल बी टफ, बट अगेन ट्रांजिशन पे मैड्रिड आर मोर क्लिनिकल. So they will definitely need to see कि इनको ट्रांजिशन ज्यादा करना पड़ेगा. पिछले मैच की जैसे नहीं कि 3-4 अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, इनको एटलीस्ट 6-7 अपॉर्चुनिटी निकालें, तब 3-4 गोल बढ़ जाएंगे सिटी के अगेंस्ट. तो आई थिंक यहाँ मैड्रिड कैन इजीली विन दिस. प्लस इनके डीएनए में है यार कि सैंटियागो बर्नाब्यू में खेलेगी, crowd will give them good rants in Spanish. So I think City will be definitely on the back foot if they are subdued in the first half. I think first half में momentum बनाना पड़ेगा मैड्रिड को. Especially with Pep being the opposition manager, well, I can certainly expect that crowd chant. Like यहाँ पर the same thing, kind of similar thing, Spy underscore D बोल रहे हैं that if Real Madrid reach the final, do you think any club will be able to beat them? Because वही है, मतलब they have been there, done that when it comes to big games, and they know it. लेकिन at the same time, like I said, they haven't kind of won either. जो first leg हारी है, तो it is kind of not an easy situation, because the Man City, this team is at a different level. So for me, अगर मैं बोलूँ तो yeah, as in if any team kind of has that motivation and kind of focus, better होगी इस बार, वो होगी Man City. But again, एक ही टीम जीत सकती है. It's either Real Madrid or Man City. Both are not going to the final, right? So that's why this semi-final makes it really really interesting, right? I feel Real will kill City in counters. मतलब वही है. That is my point, Varghese Martin. Like I was saying here, City should avoid coming to the situation itself. And City खेली है recently. There have been games जहाँ पर वो tight win भी ली है. तो that is why I'm feeling like maybe Pep might just try that. As in, again, he says that okay, we play our way and stuff like that. Like he has done that in the past, right? Well, ये क्या है? अंकित भैया, ये मगवायर टू बारसा नंबर्स क्या चल रहा है यार? सब लोगों को बारसा भेज दो आप. एक काम करो, हाँ मैं भी आ जाता हूँ. I think everyone in the panel also goes. पता है ना, I'm like a United supporter as well, जैसे ना Yes, उस केस yes. में. मगवायर वाला I'll tell you what scene is कि Ten Hag wants De Jong to come to Manchester, ठीक है? बट अब पैसे तो यू कैन नॉट स्पेंड लाइक 100 million ऑन, क्योंकि 200 million का वो है, एंड यू हैव टू मेक एन एंटायर टीम आउट ऑफ इट. यू डोंट वांट वन प्लेयर कमिंग एट दैट काइंड ऑफ बजट, राइट? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग अ मगवायर एंड रैशवर्ड स्वैप फॉर समवन लाइक अ फ्रैंकी डे जोंग. बट बार्सिलोना wants a player like Alex Telles क्योंकि उनके लेफ्ट बैक पोजीशन पे है. बट फिर आई थिंक द सेम कि जॉर्डी अल्बा नहीं भाई, अरे मार्कोस अलोंसो का लेटेस्ट है, वो बेटर रहेगा. फाइनली एक बिडर मिला है हम लोग को. अलोंसो भी चल रहा है. Alonso has been strongly linked. Last और Chelsea fans is literally they are पूरी literally बैकलाइन खत्म हो रही है आपकी. अरे यार ले लो मतलब हम लोग सब ला लीगा आ रहे हैं, सबके सब ला लीगा. इवन रीस जेम्स का ना भैया, मतलब अब यहाँ पे हम लोग रीस जेम्स को भी उठाने वाले हैं ऐसा. इवन वो कॉबम वगैरह वाला है ना सीन, बट बोल रहे हैं कि recently जो recent bias है ना उसका, and the amount of Real Madrid players and the club वो है ना मतलब seniority वगैरह want him at Real Madrid are massive. मतलब वो जो performance थी against Real Madrid ना, people were like कि हाँ इस player को तो पक्का ही लेके आना है Real Madrid, क्योंकि he is a solid right back यार, let's be real.
मतलब डिफेंसिवली मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन माय ओपिनियन. Definitely all-rounded है भाई, and you don't see many all-rounded right backs out there. यार कितना भी मस्का लगा लो ना, नहीं मिलने वाला. सेम चीज ले लेंगे, देख लेना, ले लेंगे हम. नहीं, रूडी का यार अलग बात है. नहीं, हम ट्रांसफर्स का करेंगे ना तो वापस से बात करेंगे. पक्का रियल मैड्रिड और चेल्सी के बीच लड़ाई होने वाली है उस बात में, लेकिन एब्सोल्युटली लाइक जस्ट बैंटर है पीपल. और भाई यार मैं पता है यार वापस से मॉड बनाने हैं मुझे, तो लेट मी एक्चुअली क्विकली मेक, आई थिंक राहुल आप तो हो, सूरज को भी बना देते हैं यहाँ पर क्विकली. चलो सूरज को बना दिए. एंड लेट मी नो इफ एनीवन एल्स वांट्स टू बिकम अ मॉड जो रेगुलर है. I'll certainly make them on mods, maybe stream के बाद. लेकिन हाँ, just continuing on the topic, and yes, of course, everyone like, share, subscribe, or check out Loudmouth Football and Madrid Pundits. Very good content. Trust me on that. लेकिन यहाँ पर quickly यार वेदांत मैं तुमसे पूछता हूँ ये basically क्या है यार in terms of the tactics, right? In terms of tactics, जैसे यहाँ पर we spoke about Casemiro. Valverde first leg में मतलब let's be honest, मतलब he didn't have that kind of a game जो होता है generally, right? In terms of basically maybe Rodrigo started. So would you be tempted, like हम Camavinga के बारे में बात कर रहे थे, would you be tempted? I know Cruz also rested at the weekend, to actually have that pure defensive kind of midfield, and then have just release Rodrigo, अपना Benzema and Vinicius, maybe out of the box totally different कुछ try करें, or you just go with experience. Is there a chance, because Valverde has those legs, or against Man City you need those legs, नहीं? That's a very good question. So for me, I'd keep Rodrigo out. I'd want Valverde in the lineup. I'd in fact like kind of stop the midfield with Madrid's midfielders. We'd go with a 4-3-3 with Valverde as the orthodox winger and at times being a wide midfielder role as well. Cruz will play, Casemiro will play, Modric will play. That Trimurti जो हमारी है KCM, तीनों start करने वाले हैं. Alongside Nacho as the centre back. And coming back to the Valverde point, मेरे हिसाब से Valverde has to play because if you saw in the last game, Zinchenko, De Bruyne, and I think Gabriel Jesus, who was on the City's left-hand side? De Bruyne, Alexander Zinchenko, Bernardo Silva. These three created an overload and it was a 3v2 situation. So Rodrigo had to constantly come on track back to help defensively out, and that was still a 3v2. So that is somewhere where Valverde comes into the picture and sorts that thing out. And I think in the last 10 minutes जो भी game का था ना, Valverde was decent up. We shouldn't play Cruz in this match. I'll be very honest here. It might be harsh for some Madrid fans, but Valverde should play in place of Cruz because you want someone who will just continuously run in this game. Because City don't play a front three, they have a front six. मतलब everyone knows that अब तो. मैं वही बोल रहा था सूर्यांश. 2-3-5. मतलब you see एक time you see कि KDB is playing as a center midfielder और जब उसने गोल मारा he was a 9. तो मतलब you can realize कि इस टीम को आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो एक मैन मार्क टाइप ही करता रहे, जो भागता रहे. You need a Kante profile player to play against City. ये बहुत एक करेक्ट स्टेटमेंट है इस केस में ना. And you need a workhorse, and Valverde should play instead of Cruz or Rodrigo. But Suryansh, तू मेरे को बता, तू मेरे को ये बात बता, तू Valverde को सेंट्रल मिडफील्ड में भी देखता है, बट एक ही गेम में कितनी बार ऐसा हमें देखने को मिलता है जहाँ पे Valverde एक राइट वाइड मिडफील्ड का रोल प्ले करे या फिर एक राइट विंगर का रोल प्ले करे. काफी बार हमें एक ही गेम में देखने को मिलता है. He doesn't keep that central midfield spot which he is supposed to. मतलब वो तो I'll say one thing, मतलब I guess panelists will also agree कि प्लेयर की वो मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि प्लेयर कितना वर्सेटाइल है. वो वॉलेटाइल जितना होगा उतना ही वो बेटर प्लेयर बनता है. लाइक मतलब आप देख सकते हो इवन अ प्लेयर लाइक, मतलब I'll give an example जिसका अभी मैं नाम बोल रहा था, De Bruyne. He is so volatile, his position is not fixed. वो आपको राइट पे भी दिख सकता है, लेफ्ट पे भी दिख सकता है, सेंटर पे भी दिख सकता है. That is something Valverde will ensure कि वो हो ना. मतलब you cannot play Cruz in this game. Cruz will be overrun. मतलब when you have someone like a Bernardo Silva ने तो पूरी लिवरपूल की, मतलब even Liverpool are workaholics, उसने पूरे लिवरपूल के घुटने टिका दिए थे. I literally told Uday bhai the same thing an hour back. I'll ask him.
मतलब नहीं यार, दैट इज I क्वाइट hear you एविडेंट, वो people. घुटने टिका देगा पूरी टीम के अगर भागे हम लोग. हाँ. मॉडरिच इवन दो ही माइट नहीं, बी एबल टू कोप आई अप. डू थिंक कि क्रूज शुड स्टार्ट. पहली बात तो एक्सपीरियंस बोलता है, एंड ऑब्वियसली क्रूज से ज़्यादा एक्सपीरियंस बैरली किसी प्लेयर में है मैड्रिड की उसमें. एंड जहाँ तक बात अगेन क्रूज की करें तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन. सीडीएम इजंट समथिंग दैट ही इज गुड एट. यू नेवर सी क्रूज टैकलिंग प्लेयर्स or him intercepting the ball. What he's good with is the ball and through balls, long balls, etc. etc. अगर आप लोग को याद हो तो वही सेम सिटी रियल मैड्रिड गेम में उसने एक बहुत बढ़िया थ्रू बॉल निकाली थी. रॉड्रिगो वाज चेजिंग दैट बॉल एंड कहीं ना कहीं रॉड्रिगो वो मिल भी गई थी. तो दैट वाज अ चांस जहाँ पे मैड्रिड को एक स्कोर करना चाहिए. एंड सेम थिंग अप्लाइज हियर. यहाँ पे क्रूज एक बहुत अच्छी लो ब्लॉक, एक अच्छी बहुत लॉन्ग बॉल निकालेगा एंड सिटी की हाईलाइन उसको रॉड्रिगो को चेज नहीं कर पाएगी, विनीसियस को चेज नहीं कर पाएगी. दैट समथिंग जहाँ पे क्रूज का एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर यार सकता है. ये ना, सेकंड ये थिंग की है I'll tell you कि what, सिटी और- के दो फॉरवर्ड्स खेल रहे थे ना 4-4-2 में, they were constantly somewhere around Toni Kroos, and उसी चक्कर में लूका मॉड्रिच को भी डीप ड्रॉप करना पड़ रहा था to support Toni यार Kroos. वो And तो उसी फिर चक्कर में वो वहां तो पे वो हम गेम प्लान हारे लगेगा मेरे ही ना हिसाब वेदांत. हाँ. ओए लिसन, तो मतलब अगर वो क्रूज को खिला रहे हैं, वो क्रूज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड तो होंगे ही. और क्रूज की जो लॉन्ग बॉल है ना, इट कैन ओनली वर्क अगर उस साइड जिनचेंको ना चिपका ना हो रॉड्रिगो के साथ. अगर रॉड्रिगो फंसा ना जिनचेंको में, मतलब लास्ट टाइम जिनचेंको साइलेंस्ड रॉड्रिगो which was quite evident, and this time we are facing Cancelo. People might say कि he is very attackive in nature, but जब आप उसका defensive work वगैरह देखते हो ना, वर्क एथिक वगैरह, you realize he is actually too good as a defensive right back as well. Not as I agree with Ankit भैया कि Kyle Walker is the pinnacle of right backs, मतलब defensive उसमें अभी, but Cancelo is up there with him. Yes, yes. Bro, मतलब before you मैं come in, एक पॉइंट क्या उदय प्लीज. एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि इनकी मिडरेड में ना स्विच ऑफ प्ले है ही नहीं. दे कैन नॉट स्ट्रेच आउट हाई प्रेसिंग टीम्स. प्रीमियर लीग टीम्स नो हाउ टू प्ले लॉन्ग बॉल्स फ्रॉम फ्लैंक टू फ्लैंक. फुल बैक्स इनके एक दूसरे को पास ही नहीं करते हैं. दे नीड टू पास विट टू विट, ताकि वो स्ट्रेच कर पाए. सिटी को रोटेट करते रहते हैं सिटी आराम से. ऐसे बोला डेब्रोना आगे 9 पोजीशन में आ जाता है, तो वो आएगा ही, क्योंकि योर गाय इंटेंसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है पासिंग में इतनी ज्यादा. तो इनको वो बनानी पड़ेगी. सिर्फ अगेन टोनी क्रूज को निकाल दोगे तो लॉन्ग बॉल्स भी बहुत कम आएंगे इनकी. तो आई थिंक टोनी क्रूज को तो खिलाना ही चाहिए भाई, कि वो निकाल देता है. ही कैन हिज बॉल. यही आपने जो फुल बैक्स क्रॉस नहीं कर पास नहीं करते एक दूसरे को, यही मेरे को बस जानी कारवाहल और मार्सेलो की पार्टनरशिप याद दिलाता है. Okay, so बहुत सारे tactics है, trust me on this, and ये prove करता है that is why this game is so interesting. The conversation was beautiful, I just love this conversation because again there are two things. मतलब just as a point of view मेरा दूँ, again as neutral like Uday said, the fact कि यार Valverde has वो है 2 sets of lungs and all those things, मतलब honestly वो है. But वो ये fullback was an issue for both the teams. तो आप बोलोगे maybe it's better suited there क्योंकि he is the person who can actually get off the ball from them और वहाँ पर एक space create करेगा for basically the other way. और defensively he's much better there, but at the same time if you have Casemiro and Valverde in midfield, maybe वही है, it will give the freedom to others. और वो एक चीज मैं देखना चाहूंगा just as a neutral, I can see a lot of goals उसमें for Madrid compared to the other way around में क्या होगा, it will be more like a KG match. So I would like to see Valverde and Casemiro in the middle. Yeah, I know Cruz fans will probably kill me for this, लेकिन वो मेरा राय है just for the neutral perspective. लेकिन हाँ, again यार people, thank you everyone for joining. About 175 people are watching. Hope कि सब लोग, and I mean everyone, has hit that like button. सबसे पहले वो करिए please. This certainly helps. Take that poll और बोलिए मत loud mouth football है. Just takes a second. Do subscribe यार, बहुत अच्छा content है. We are encouraging each of the community people here. Same goes for Madrid Pundit. So बहुत अच्छा content है. You will not be disappointed with 3 of our channels. Trust me on that. And yes, we will be talking about channel name maybe in the next stream. अभी के लिए तो नहीं. यहाँ पर लूका मॉड्रिच की तो बात की नहीं यार. लूका मॉड्रिच मेजर थ्रेट एट बर्नबेउ, ही इज डिफरेंट. या मतलब दैट इज द थिंग आई सेड, लाइक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दो रहेंगे प्रॉपर रनर्स एंड लूका मॉड्रिच खुद भी है, गिव हिम दैट फ्रीडम which probably वो एक क्वालिटी चाहिए to get that ball through to Benzema and Vinicius Junior, and that's maybe the difference. लेकिन talking about the other game, I know मतलब काफी बात कर लिए रियल मैड्रिड की, and we'll come back to this people. Villareal and Liverpool, and yes, हार्दिक ने बताया यार, आप जो वीडियो किया उसका पिन कर दो, especially for Villareal fans वो है, do check it out. There is a strong possibility. I had done a video about second leg comeback. Do check it out यार स्ट्रीम के बाद में. लेकिन यहाँ पर उदय, I don't know, Liverpool are winning ugly as well. I have to say यार, जो न्यूकासल के साथ था, I think you played Wednesday night को and then you played on Saturday afternoon.
ठीक है, so that was kind of unfair on Liverpool for once, I have to say. Yeah. लेकिन again you got those 3 points and changes के साथ you got those 3 points, right? So would you say, considering you are still fighting for the title in Premier League, next game किसके साथ आपका? If I'm not wrong, Spurs. Oh my God, that's a big. So would you be confident कि यार, for example, Ceramica comes in, you know, bring in Matip again, like, and what changes are you looking for? Go मैं Harry इस गेम Kane, में go Harry Kane. मैं इस गेम में ना आपको सही बोलूं, चैंपियंस लीग की गेम में सिमिगास को खिला दो रॉबर्टसन के लिए, रॉबर्टसन को मैं स्पर्स की गेम के लिए रखूंगा भाई. वी नीड आवर लंग्स अगेंस्ट स्पर्स. ह्यूमनसन, कुलुसेव्स्की एंड केन को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा भाई. रॉबर्टसन चाहिए. सेकंड, आई थिंक यार जेरार्ड मोरेनो हैज दिस स्कोरिंग प्रोवेस. वो खेल रहे हैं इस मैच में, किसी ने पूछा आपसे कमेंट्स में, वो खेल रहे हैं इस मैच में, तो ऑब्वियसली आई थिंक विलारियल विल गिव अ गुड फाइट. उनाई एमरी की टीम है भाई, कप टीम है, देयर अ प्रॉपर कप टीम. इतने टाइटल जिता चुका है ये यूरोपा, तो आई थिंक समथिंग व्हिच आर्सेनल हैव रियली मिस्ड आउट ऑन. ऑब्वियसली आर्सेनल हैव नॉट बीन फीचरिंग इन दिस कंपटीशन सिंस डेकेड्स, बट आई थिंक मूविंग बैक टू द कन्वर्सेशन, आई थिंक हाँ ऑब्वियसली आई थिंक एक और बात बोलना चाहूंगा मैं कि हमारे प्लेयर्स है ना जो लिवरपूल के, वो सब अटैकर बन जाते हैं. हाई लाइन पे खेलते हैं ना, सब पास करने लग जाते हैं. वैन डाइक आके एक ठोक देगा शॉट, मैटिप ठोक देगा, फबीनो मार देगा, कोई भी मार देता है, मतलब किसी पोजीशन से. तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिवरपूल कि दे फील सो कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल. यू नो इवन अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ सिटी, यू नो देयर विल बी फेजेस कि हाँ हमें पता है कि हमारा जो अटैक है वो फिजल आउट नहीं करेगा. तो एटलीस्ट इस फैसेट में मैं खुश हूँ कि अगर लिवरपूल ने 1-2 गोल मार दिए ना एटलीस्ट, तो हम निकाल लेंगे गेम आराम से. So Uday, I'm putting you on the spot. I know, मतलब in basically we had a conversation already in the watch along. आप बोले थे यार you prefer Real Madrid at the time. So what do you think? अभी भी you're sticking to that, or you want to basically change it and say नहीं, I want an all English final. यार मुझे तो रियल मैड्रिड चाहिए. मैं सिटी के साथ नहीं खेलना चाहता. फाइनल में मुझे चाहिए रियल मैड्रिड एटलीस्ट. नो डिसरिस्पेक्ट टू द मैड्रिड फैंस, बट ट्रस्ट मी, सिटी के साथ खेलना इनको भी पता है कि ये सिटी के साथ नहीं खेलना चाहेंगे, बट ये खेल रहे हैं. तो एज अ लिवरपूल फैन ऑल्सो आई वांट कि सिटी के साथ बिल्कुल ना खेलूं मैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट आवर चांसेस ऑफ विनिंग द कंपटीशन विल इंक्रीज. यार मैड्रिड एंड लिवरपूल आर करंटली एट दिस इक्वल मोमेंटम, क्योंकि इनके पास डीएनए है, इनके पास अटैकिंग प्रोवेस है, इनके पास क्लिनिकल एबिलिटी है. हमारे पास क्लिनिकल एबिलिटी नहीं होगी, बट एटलीस्ट लिवरपूल एक नए मंत्रा के साथ आई है इस बारी इस सीजन. तो आई थिंक इक्वल चांसेस हो जाते हैं जब मैड्रिड और लिवरपूल खेलेगी. सिटी के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं अगेंस्ट लिवरपूल अगर देखो फाइनल में. Fair enough. और यार I think सूर्यांश, आपको शायद निकलना है सूर्यांश. So सूर्यांश quickly यार, before you go, I know हम बात करते रहेंगे बाकियों से, लेकिन what are your predictions? मतलब just where the neutral had as a content creator अभी, tell me what are your predictions दोनों मैचेस के लिए, आज का और कल का? 2-0 Villarreal. गुड इवनिंग होगा. अरे भाई एवरेज यूनाइटेड फैन कौन है? लिवरपूल का यार, I respect them but I don't want them to win. I'll be very honest here. And I'll go with Real Madrid 3-1. ये okay. I think बात probably यार बाइस बिल्कुल नहीं है. नहीं घर पे एक्चुअली मेरी टीम है, I want them to win. अब मैं ये थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि यार सिटी जीतेगी है वो. I'll say कि हाँ Madrid to win. चलो फिर guys, but before I leave I'll just want to say that कि Almighty Blues Cricket को please subscribe करो. Take Ankit Bhaiya to greater heights and loud mouth को please get him to 1K ASAP. So bye guys, take care, bye bye. Thank you so much. चलो थैंक्स यार, मिलते हैं फिर. ऑल द बेस्ट फॉर गेम. और सूर्यांश लेफ्ट अस, बट वी हैव वेदांत. मैड्रिडिस्ट, आई नो, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. डेफिनेटली हम बात करने वाले और भी. Certainly, like I won't be surprised. I want Villarreal to win. Last first leg stream में बोला था, Villarreal is probably the most favored team in the last weeks of Champions League. मतलब इतना सपोर्ट शायद ही कभी मिला होगा उन्हें, इतना प्यार मिला उन्हें. बट अंकित में यही क्वेश्चन उठता है ना, सॉरी टू कट यू इन, बट यही क्वेश्चन उठ जाता है ना कि जो भी अंडरडॉग्स रहे हैं इन द चैंपियंस लीग, सेमीफाइनल के आगे उनका कोई फासला नहीं रहता. दैट्स द थिंग. Can the same logic come here as well? I mean, the same recent year we had a lot of, I think quarterfinals, semifinals, we had Lyon, we had Atalanta, we had Leipzig, Ajax. मतलब that's true, but Spurs भी underdogs भी थे. But just I know as Chelsea fan वो आ गया मेरा Chelsea fan बाहर एक बार. News from ये देखो यार,
Santiago Bernabeu अद्वै का pending सेंस ऑफ the ह्यूमर. entrance. Well, let's see अद्वै. मैं तो बोलूंगा करना चाहिए for once, because Real Madrid यार उनको चांस मत दो. एक भनक नहीं मिले ना, and that'll be a goal. But again, there are cases like, okay, they just need that 1 second, so why take that chance? So it's kind of between the devil and deep blue sea, बहुत ही catch 22 situation है. एक I think अंकित, Villarreal will take the game in extra time. ये of जो the इन्होंने game. कमेंट मारा ना आयुष ने, एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाएंगे, मुझे इतना पता है नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैं लिवरपूल के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों. लुइस डियाज आ गया यार. अब लुइस डियाज जो एक नया ही अलग अवतार से आया है कि वी वर सो रिडंडेंट कि जब फर्मिनो, सादियो और ये साला खेल रहे थे एक साथ, एक तरह से हम वी हैड बिकम फ्लैट, वी हैड हिट अ रट. लुइस डियाज और जॉर्डन ने क्या किया है, एक their ability of dribbling, of the pace that they exhibit on the pitch, it takes out defenses also. So एक तरह से ना दियाज एक कॉन्फिडेंस लेकर आया है, इंटरनल कंपटीशन लेकर आया है. साला माने अब बहुत they are fighting for their position. So that is why in the new number 9 avatar which Mane is playing in, I think he's performing really well. So I think Liverpool should take it out. अगर हम चलो हार भी जाए ना मैच, 2-1 हार जाएंगे, 3-2 हार जाएंगे, पर गोल तो मारेगी लिवरपूल. ये तो मारना तो है ही. गोल मारेगी. लेकिन एक चीज बता देता हूँ यार उदय के लिए, एंड फॉर ऑल दोज लिवरपूल फैंस, ऑफ कोर्स वेलकम. लेकिन यार द फैक्ट ये है कि एट सेरामिका ना बोथ यूवे एंड बायर्न फेल टू विन. विलारियल, यस, उन्होंने भी काफी चेंजेस किए एंड दे आर कमिंग ऑफ अ लॉस, लेकिन इट वाज बेसिकली अ सेकंड टीम फॉर देम प्रॉपर जो खेल रही थी. दे आर ऑन अ 12 गेम अनबीटन होम रन, राइट? एंड बहुत पेंडिंग है यार, एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था फर्स्ट लेग में. तो काफी चीज काइंड ऑफ सेइंग दैट ओके दिस इज द गेम ऑफ द लाइफ काइंड ऑफ थिंग. सो and the atmosphere will be there. The yellow, the yellow submarine, there is a Yellow submarine. Ankit bhai, Ankit is trying to intimidate me. नहीं यार, उदय ट्रस्ट मी, मैं मतलब अगेन मैं वीडियो निकाला तो काफी लिवरपूल फैंस मुझे डीएम किए थे यार, हमने कम बैक किया था. दैट इज द पॉइंट. यू नो व्हाट, वन स्टैट, लिवरपूल इन अ सेमीफाइनल आर द ओनली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द चैंपियंस लीग जो कम बैक किए विद ग्रेटर देन अ 2 goal deficit in the semi-finals. Only team. And that is the thing. Maybe it's history recreating itself. Liverpool match में यहाँ पर Villarreal कर दे. Possible, I would say probable नहीं है. And that's something of a reality, absolutely. नहीं bro. But again, the same thing comes into the picture. The quality which Liverpool possess, in my opinion, Juventus don't even have half of that मेरे हिसाब से. And Bayern Munich भी कहीं ना कहीं slightly पीछे है जो Liverpool के पास है मेरे हिसाब से. Front three, full backs, midfield, Thiago. भाई मैजिक तो है बट नो डाउट यार, एटमॉस्फेयर उन्होंने 12th मैन की बात की है, बिल्कुल वी बी इंटिमिडेटेड ऑन द पिच, वो तो करेगा एक्ट. बट यार लिवरपूल निकाल लेगी यार भाई, पता नहीं, मुझे तो लग ही रहा है निकाल लेगी. एज अ राइवल फैन बहुत ही शॉक होगा यार. दिस विल बी लाइक आई सेड, आई डोंट माइंड इट, लेकिन आई डोंट सी इट. Put it that way. Obviously, as a Chelsea fan, you would love to see Liverpool losing any day. यार नहीं. On the other hand, मैं चाहता हूँ यार FA कप के लिए ना जो थोड़ा मोटिवेशन है कम हो जाए, आप लोग जीत जाओ, बाकी चीज आई डोंट माइंड दैट. लेकिन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर इंजरीज को लेकर. यस, मैं स्टार भी कहूँ, काफी क्वेश्चंस, आई विल कम बैक टू दैट पीपल. वेदांत ने बोला यार अलाबा शुड स्टार्ट. वेदांत, इज इट करेक्ट? नहीं, अलाबा इज इन द लाइनअप, मतलब न्यूज़ निकल गई है, लाइनअप नहीं सॉरी, इन द टीम शीट जो आती है, स्क्वाड में है वो, बट लाइनअप का तो पता नहीं. Yes. So I think they will be publishing it obviously tomorrow. लेकिन हाँ, मतलब I would see, क्योंकि the fact that Real Madrid playing on Wednesday, अभी भी chance है, there is a high chance कि Alaba will play. So Real Madrid again, for them, just like Villarreal, this is probably the last game of the season potentially, and they would like to give it their all. That is what. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, again questions आ रहे थे, all Spanish, all English final, मैंने खुद डाला है thumbnail में. मैं देख सकता हूँ यार, ऑनेस्टली मैं देख सकता हूँ कि the Spanish side will go for it. This is the game of the season. Like that is why it's so interesting, right? Absolutely. लेकिन yes, of course, अथर्वा बोलते हुए अंकित भैया लाइनअप में आ गया, वो अलाबा स्क्वाड में आ गया. जस्ट सॉरी, आ गया. ये लाइनअप आज ही कर दिए. लाइनअप नहीं सॉरी, स्क्वाड में ना कंफर्म्ड है, मैड्रिड से कंफर्म. ठीक है. I think Vedant, you're lagging a little bit. I'm not sure if it's me or Vedant. थोड़ा सा लैग है. कोई नहीं. वेदांत, मैंने तेरे को बोला था यार कि ना अलाबा को मेरे भाई नहीं खिलाना चाहिए, because you should be going in. He started, I spoke to him about him कि he made many mistakes in the first half, against City. तो उसको नहीं खिलाना चाहिए बिल्कुल भी भाई. थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उसका लो रहेगा. प्लस आई थिंक नाचो did a good job in the second half, no doubt. एक गोल कंसीड कर लिया तूने तब भी,
but Nacho will play better as a center half, I think. Ame यहाँ saying पे Nacho तो कह खेला रहा तो City नाचो खेला तो सिटी 3 गोल पक्का। लेकिन कहाँ खेला तो नहीं यार, यहाँ मेरी ना पे हाँ 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 बोलो नहीं बोलो। नहीं मैं वही बोल रहा था नाचो ना वो एक फुल बैक सिचुएशन में आई थिंक इट डज बेटर देन अ सेंटर बैक मतलब आई डोंट नो यू माइट डिसएग्री वेदांत मेरे ख्याल से अगेंस्ट सिटी ना एक 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 वॉल की तरह ही विल बी देयर मतलब ही विल नॉट गेट द यू नो लेट द बॉल इनसाइड वो क्लोज डाउन नहीं करते यार बाकी फुल बैक जो है आपके मेंडी है यू नो दे डोंट क्लोज डाउन एज मच तो नाचो इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर तो वो फुल बैक में मे बी ही कैन बी बेटर लाइक यू नो उदय सेड वो एक ओपनिंग कम हो जाएगी मैन सिटी के लिए नहीं आई थिंक इट्स मोर ऑफ हाउ रियल मैड्रिड प्ले मेरे हिसाब से क्योंकि नाचो अगर आप एक लो ब्लॉक खिला रहे हो या फिर आप एक पोजीशन रख रहे हो तो नाचो डज अ ग्रेट जॉब मेरे हिसाब से बट यही अगर आप हाई लाइन खिला रहे हो ही डज नॉट हैव द पेस टू यू नो कैच अप विद समवन लाइक उस्मान डेम्बेले या फिर अगर आप सिटी की बात करो ही कैन नॉट कैच अप विद बर्नार्डो सिल्वा और फिल फोडेन दैट्स हिज प्रॉब्लम एंड वहां पे उसको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है I तो would prefer him as a right back or a center back more than a left back. Left back is something where he just should not be. I think bro attacking full back situation में वो नहीं खेल पाएगा है ना वो आगे नहीं खेल पाएगा इतना हाँ that's also there. He's a pessimistic defender मेरे हिसाब से मतलब he reads the game like he thinks of the negatives first. अगर मैं यहाँ बॉल दूंगा तो ये negative output रहेगा. That's why he plays safe. Right. What about एकदम लेफ्ट फील्ड बोलूंगा यार व्हाट अबाउट कारवाल क्योंकि एक मैच में अच्छा किया था ना कारवाल एज अ लेफ्ट बैक ही गॉट 2 assists if I'm not wrong नहीं 2 assists yeah 2 assists one was as a right back and the second one was as a left back so play him there and play Vasquez मतलब again I'm just putting it there क्योंकि कुछ अलग करना पड़ेगा मतलब you cannot continue same way क्योंकि Pep will be knowing better what to expect or he has one ugly as well so is it even a consideration कि नहीं that's too much actually it is not a consideration because कार्लो एंचेलोटी को जहां तक उसका जिस वजह से वो खिला रहा है वो ऐसे इतने बड़े गेम्स में इतना बड़ा गैम्बल नहीं करेगा कारवाल को he was like a more of a makeshift left back because we don't have any left backs Marcelo was injured Mendy was injured Miguel has fitness issues going on and यहाँ पे आपके पास वास्केस प्रेजेंट था तो आपने वास्केस को राइट बैक खिला लिया and Carvajal as a left back but यहाँ पे you'll see Carvajal as a right back and you'll see Ferland Mendy and I hope Ferland Mendy does a better job because he knows the job is on the line for me because अगले season there's a great chance he won't be in the lineup at least. Yeah, that's a fair point and that is something that he needs to prove himself or it's between Alaba and Mendy probably right. What is your opinion on Carlo Ancelotti? Let's take a neutral opinion. मतलब उदय हम बात किए काफी स्ट्रीम्स में इसके बारे में and you know your history definitely उदय. What do you think as in Carlo Ancelotti? Where would you rank him in terms of managers of history? If you want to tame it as success कितना लिया उसने successful manager है वो definitely successful manager है पहला मैनेजर है जिसने 5 यूरोपियन लीग्स में अपना राज किया है बट देन आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट टैक्टिक्स एंड इफ यू टॉक अबाउट मॉडर्न फुटबॉल आई वुड एनीवेज गो इन विद एन अटैकिंग मैनेजर पीपल विल गिव मी द फ्लैग हियर बट अगर मुझे ग्राहम पॉटर मिल रहा है और मुझे कार्लो एंचेलोटी मिल रहा है ना मैं ग्राहम पॉटर को लूंगा ग्राहम पॉटर इज द ब्राइट मैनेजर breaking news trust me it is I follow attacking philosophy मेरे साथ pragmatism Jose Mourinho park the bus philosophy Diego Simeone is the only manager that I like when it comes to parking the bus because that guy has been ruling it and he frustrates team Liverpool को निकालता है वो City को कर देगा frustrate तो काफी frustrate करता है वो तो you know I am not a big fan of this philosophy at all attacking football is the way of getting goals chances XG देख लो attacking football में से ज्यादा निकलती है और आप चेल्सी के फैन हो आपको पता है कि मेरी उदय की तो लड़ाई होने वाली है परफॉर्म करना मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा फिलॉसफी एकदम ही अलग है उदय knows it very well you know for me it's part of football and the fact that football you know is so interesting वो chess match जो बनता है ना for me it's very interesting only in Champions League I understand exactly I love it as well Uday don't get me wrong लेकिन week out football में brilliant है चैंपियंस लीग में यार वो टैक्टिकल गेम मुझे अच्छा लगता है देखने जस्ट मी सिटी यार बाय द वे यार सिटी फैंस भी मारेंगे पकड़ के हम लोग सिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं किए लाइक ऑनेस्टली फॉर देम और क्या मोटिवेशन हो गया फॉर देम टू विन द चैंपियंस लीग फॉर देम मतलब इससे बड़ा मोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइनअप मेरे ख्याल से यार दे आर आल्सो हैविंग न्यूकासल आई थिंक वीकेंड में काफी इंपॉर्टेंट मैच है दे आर प्लेइंग एट होम दे हैव अ 1 point लीड ओवर लिवरपूल सोचेंगे नहीं आई थिंक पेप विल प्ले स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप प्रॉब्लम यही है लॉट ऑफ पीपल बोल रहे हैं यार आज ट्रेन की है काइल वॉकर यस एंड ही स्टिल हैज 24 hours एनीथिंग कैन हैपन
But I think Pep saying about him possibly being out for the season, मतलब tells that वो start करने तो शायद ही होंगे, मतलब in terms of ability. And again, Cancelo is brilliant, मतलब तो और Vinicius Junior के again maybe it's a new tactic, तो I think it's okay, right? Left back is the only issue. हाँ, वहाँ पर Zinchenko has to start. Centre back it'll be Laporte and I think Diaz, probably Stones भी, I think if I'm not wrong, He's injured. I think he's injured. Stones injured. Stones injured है और I don't think यार Fernandinho कोई खेलने वाले. He'll go with typical Rodri, your Bernardo Silva, Kevin De Bruyne and Gabriel Jesus. यार Gabriel Jesus, I don't know, Right. Vedant, मतलब Real Madrid के लिए he is the danger man ना. He's been the danger man for quite a while. तो मतलब अच्छा एक बंदा बोल दो, apart from Kevin De Bruyne and maybe Bernardo Silva, which is obvious, who do you think will make a difference in this game? I think Sports Cup had asked that question earlier. Who's the difference maker in this game from City? You just took his name. Gabriel Jesus is the man for Man City. Against Real Madrid, he's got a very good goal record. I think every time he's faced Real Madrid, he has scored a goal. He's managed to. So it speaks for itself. Again, he's a threat tomorrow, so he's going to start. Carvajal Yeah. at left back and we lose. Sagar ना इतना बुरा सोचते हैं ये लोग हमारे डिफेंडर्स के बारे में. अरे भाई पहले ना अच्छा यार, गाब्रियल जीसस को क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग जब उसने अभी परफॉर्मेंस नहीं दी थी ना. आर्सेनल का जो रूमर है उससे पहले उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वाइड पे ही प्लेज वेरी वाइड, बट नाउ ही इज रीफाउंड हिज दैट स्टिग्मा ऑफ बीइंग अ पोचर. नाउ ही इज बीन स्कोरिंग गोल्स, सो आई थिंक ऑब्वियसली ही ऑलवेज हैड दैट एबिलिटी. इट्स जस्ट दैट कि सिटी में अगर आप खेलोगे यू हैव टू बी अ वेरी डिसिप्लिन्ड प्लेयर. जैक ग्रिलिश यूज्ड टू प्ले अ फ्री रोल इन एस्टन विला. यहाँ पे उसको डिसिप्लिन के साथ खेलना पड़ रहा है. तो पेप के अंदर इतने आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं ना, यू आर नॉट एबल टू sustain the ability that you really want to exhibit on the pitch sometimes. So I think that is where I think he'll do a better job in other clubs. But nonetheless, for me, Gabriel Jesus is the game changer for City in this match, and Riyad Mahrez as well. Riyad Mahrez की crossing, his passing is going to be the game changing formula. मैं इसीलिए यार I know, मतलब यहाँ पर काफी रियल मैड्रिड फैंस बोल रहे थे 4-0 फाइनल हो जाएगा. नाचो अगर स्टार्ट करता है ना लेफ्ट बैक में, ट्रस्ट मी यार, वो रियाद मारेज के क्रॉस को बचाना बहुत जरूरी है. मतलब दैट इज द ओनली पॉइंट. वो नहीं बचा पाएगा फिर. नहीं, Holland Mendy has to play at left back. Yeah. हाँ मतलब देखिए यार, अगेन मतलब मे बी राय की हो जाती है. फॉर मी Holland Mendy, he's had a great season last season. इस सीजन में वो है, मतलब he is little bit vulnerable when it comes to getting beaten on pace, which is not what we call about Holland Mendy. अदवे ने बहुत रेपिटेटिवली एक कमेंट डाला, उसका वो हाईलाइट कर दो. किसका? अदवे यार उसके कमेंट्स. Loudmouth G, थोड़ा टाइम दो. Luis Diaz next year will be flatter than the Chinnaswamy just Chelsea fans. नहीं यार, है यार बंदा सही है. He is a proper winger. If Kyle Walker plays, City wins. If not, Madrid. He is the best defensive right back available and can stop Vinicius. Watch out. Decent comment, definitely makes sense. लेकिन वही है, मतलब Cancelo, like I think वेदांत ने बोला था, he doesn't have the pace, but he has that, he reads the game better than Kyle Walker in terms of the reading the game. So there is advantage, but again left back में disadvantages. That's why we're talking about कौन खेलेगा right wing में about Real Madrid, क्योंकि वहाँ पर है थोड़े error prone City. So that is something that will be okay. Mendy is fit, why won't he start? Well, Nikhil, out of the box मैं तो बोल रहा था, because एक होता है you were allowing crosses to come in that first leg as well, which was something that as a neutral I clearly saw that. So that is why I suggested why not try Nacho, but I think Vedant has explained that already. Okay. Madrid this season got, if Kyle Walker plays, I can bet on City. He's a top. Well, people are saying Kyle Walker is the difference. I don't know, yaar. Matlab, for me, certainly if I have to say, like, that midfield is the key. Yaar. Matlab, like I said earlier, it's about the midfield of Madrid kya rehti hai. If they are able to kind of get the ball, and City kya khelti hai. What game does City play, right? Luis Diaz will be with 5 medals, one from Porto too. Let's see. I don't know, yaar. Matlab, again, let's come to that, because yes, we've spoken about the tactics and all that. By the way, Villareal के काफी injuries है. Just for everyone to know. We haven't spoken about their defensive line, Raul Albiol, and their fullbacks also. I think their fullbacks did a decent job in the first half. First half, they were able to subdue Luis Diaz, and left back was able to subdue Mohamed Salah to a certain extent. Jordan Henderson भी rotate करके आ रहा था. Jordan Henderson plays in a triangle with Trent and Mohamed Salah. तो Jordan Henderson को भी push कर रहा था पीछे.
तो I think Villarreal के fullbacks अच्छे हैं, no doubt, but obviously as a unit they weren't performing that great, so obviously they had to come down to that level. But I still feel that looking at Pau Torres and Raul Albiol, the way they actually defended against Bayern Munich as well, I think they've done a tremendous job throughout the season. So Villarreal की defensive line को we cannot underestimate them at all. They are very well experienced, and Pau Torres has been linked with so many clubs, over the seasons. Not that I'm trying to increase the valuation and all that, but Your Lord Moreno is not available. Alberto Who? Moreno is still injured. Alberto Moreno injured है वो. अभी भी. वो गोल याद है तो- आपको? वो जो गोल मारा था उसने. अरे एकदम. He took that sprint from नहीं तो 70 yards. Estupinian is going to play at left back, no? Yeah. He Alberto last- Moreno's out. Estupinian. last game he only played. उसका ही तो था I बेचारे का think he- reflection. He did an average job मेरे हिसाब से. Estupinian wasn't that good, but Juan Foyth on the other hand was very very good मेरे हिसाब से. Foyth was good, yeah. He did an average job, but first half में उसने हेंडरसन को काफी रोका था आगे जाने से. तो मतलब first half की बात कर रहा था मतलब. But yeah, I think they are obviously Liverpool के fullback से compare करेगा कोई है ही नहीं मतलब कोई comparison ही नहीं है. But at और the moment, जो गोमेज खेला था ना तो ट्रेंट गिविंग द बॉल्स वो इंटरेस्टिंग रहेगा. लो सेल्सो आई डोंट नो मतलब आई नो ही हैज टू प्ले. अगर सब फिट होते ना मैं सोचता हूँ इस गेम में मे बी लो सेल्सो सैक्रिफाइस करते बिकॉज आई थिंक वो ट्रेंट वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट लेग. तो वो एक एलिमेंट है जो दे नीडेड मोर पेस अप फ्रंट सो दैट दे आर काइंड ऑफ एक प्रेस कर रहे हैं. लेकिन उदय इफ आई नॉट रॉन्ग जेरार्ड मोरेनो ही इज बैक ही इज ट्रेनिंग. लेकिन अगेन आई विल बी सरप्राइज्ड कि वो स्टार्ट करे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो एक हैमस्ट्रिंग इंजरी था. आई नो उनका लास्ट गेम है. दे माइट जस्ट रिस्क इट. they will risk it. They will risk it. No. Okay. Ankit, let's just talk about their attack also for some time. उनके अटैक में अगर उनके पास बॉल होती है, even in the league, even in other smaller fixtures, they play beautiful football. यार ऐसी कोई though their build-ups are very slow, the frequency is very slow, but when Lo Celso as a lone player is also doing so well for them, creative ability Lo Celso की Tottenham से ज़्यादा यहाँ पे आ रही है. So I think Danjuma की बात की थी विदान ने पहले. And इसकी Gerard Moreno is anyways अरे Danjuma भी डाउटफुल है. Danjuma हाँ. Danjuma भी doubtful है. Yeremy Pino is bar. So basically, out of the three, I can see only one person starting. That is basically Danjuma, Gerard Moreno, and Yeremy Pino. Right. तीनों में से एक ही शुरू करेगा. And that is why I'm seeing that मतलब they are missing that firepower that usually होता है. That is why Lo Celso has to kind of work a little bit more. It's just not the creativity. He has to work lot more, in this game. जो थोड़ा सा मिस होगा नहीं उधर. और बिल्कुल आप सही बोल रहे हो. एंड एक्स टॉटनहम प्लेयर ये कॉक्युलन है जो ये भी काफी स्टार्टर करता है अटैक को. मतलब पिछले मैच में कुछ नहीं किया इसने. कॉक्युलन ने बहुत नहीं तो ही क्रिएट्स अ डिस्पैरिटी बिटवीन टीम्स. ही इंश्योर्स की कोई ना कोई लड़ाई तो होगी पिच में. तो दंगे फसाद के मामले में कॉक्युलन सबसे आगे है. बाकी I think overall if you see man Liverpool are any days better than them, but you never know. They've taken out the biggest teams in the Champions League competition. They can create an upset for Liverpool fans today also. So yeah. यार ये वेदांत ये क्या आ रहा है? Madrid prepared to sell Casemiro. नहीं फेक है वो फेक है. It's not happening. 2-3 sources close to the club have said कि Casemiro is not going anywhere. ऊपर से last season रियल मैड्रिड का जब आता है तो न्यूज़ आता है तो रियल है, जो जाता है तो फेक है. नहीं ऊपर से the thing is that last season Real Madrid renewed his contract for like 3 to 4 years. So why would they all of a sudden change that plan? Makes sense. That's what Makes sense. Absolutely. It absolutely makes sense. And yes, good evening. By the way, people, we have spoken a lot. जो भी late join कर रहे हैं, and do like the stream. Check out Loudmouth Football. Link है description में. Like always, of Madrid pundits as well. आप देखते हो काफी सारा अच्छा content दे रहे हैं वो लोग दोनों. So please, if you are not subscribed, please do subscribe to them. And by chance Almighty Blues को नहीं है तो we'll definitely have you for the next streams as well. लेकिन we'll do a lot more. We might change the name of the channel, but that is something that हम slowly करेंगे. For now, yeah, get in all your predictions. मैं देख रहा हूँ बहुत लोग पूछ रहे हैं predictions के बारे में. Get in all your predictions tonight. Quickly, Vedant, मतलब your gut क्या बोलता है? मतलब Villarreal can do it really? Liverpool win. Liverpool 2-0 win. Okay, interesting. So 2-0 to Liverpool. यहाँ पर I got 2-0 from Suryansh to kind of balance this out. Of course, I think Uday is going to say that it's going to be Liverpool. Like, what's your score prediction, Uday? I think 3-1 or 3-2 Liverpool. गोल तो मारेगी Villarreal. चलो कोई नहीं. मैं जा रहा हूँ यहाँ पर. It is at Villarreal, जहाँ पर they have been unbeaten as well. I'm going for a draw, and that is good for Liverpool. So I'm going for a draw. लेकिन score draw हो जाए यार. मतलब I should see Villarreal attacking. मतलब वो एक थोड़ा सा I think they gave
bit too much respect to Liverpool. वो नहीं देखना चाहूँगा. I know they deserve it as well, Liverpool. लेकिन it's there. This is the match, and I would like to see goals plenty. कल के लिए Uday, what's your call in terms of prediction? Yeah, as much as I want Madrid to win this, I think 60% chances are with City, 40 with Madrid. But all in all, I think Madrid के पास ज़्यादा lethal firepower है. Counter attacking में वो निकाल सकते हैं गेम आराम से. अगर City are not sharp on their day, Madrid can take advantage of that. So City have to be, Pep actually stutters and he also fumbles a lot in major competitions. हमने देखा है in the past couple of seasons. So I think this is the right opportunity for Madrid fans to, take advantage of that. And as long as the 12th man is roaring out loud, शांति नहीं रहनी चाहिए स्टेडियम में. मतलब ऐसी की तैसी कर दो उनकी सिटी, निकालो उनको. Absolutely. And yes, Keita scored at the weekend, and Thiago has been the player of Liverpool for the last 1 month easily. मतलब these are definitely difference makers possibly, लेकिन वही है, tactic बहुत ही interesting रहेगा. Good evening to Prasanna as well. By the way, बहुत लोग जो late join किए, सब लोग like करिए. Yes, Rahul, मैं सोचा था जाऊँगा, लेकिन I have another stream to go. So everyone watching, do join us at Rock Baba also. Especially Chelsea fans, we are going to discuss. वहाँ पर हम basically, we are just going to भड़ास निकालेंगे about Chelsea because it's much needed. So we are going to have a live stream there. लेकिन yes, we'll be back hopefully tomorrow or the after मैं publish करने वाला on my socials. Do check out my socials as well, and very soon you'll get a lot more content as usual जो होता था. Thanks everyone join करने के लिए. Any last words, Vedant? Nothing. Subscribe to Almighty Blues Cricket, yaar. I mean, after losing a channel, अगर बंदे में इतना confidence है, like इतने sweetly, इतनी humble way में he talks and etc. I think it was his community post where he tagged every content creator who helped him out. So that clearly speaks something. That how kind he is and how great he is. So if you haven't subscribed to Almighty Blues Cricket, go ahead and do it now, and subscribe to Loudmouth Football as well. Amazing content. Absolutely, and Madrid Pundits as well. Yes, thank you. मैं ज़्यादा बात करना चाह रहा था, लेकिन as I said, I have a stream to go. And thanks Vedant, thanks Uday आने के लिए. We'll meet again. Wish you all the luck, Uday, tonight. And of course, Vedant हम कल बात करेंगे. लेकिन wish you all the luck as well. And everyone watching, thanks again. Shout out to all the mods. We'll be back very soon. Don't worry about that. Till next time, take care and come on, yaar. We have to get back like these teams. That is Chelsea and Liverpool. True.